We have started the intrauterine devices. Intrauterine devices is actually three different types. One is inert IUD or non-medicated IUD. Second is that is copper releasing IUD. And third will be hormone releasing IUD. IUD means what? Now the instrument which fit in the uterus. Inside the uterus, so it is called as IUD, intrauterine devices. But that devices may be non-medicated, may be copper releasing, may be hormone releasing. So we are coming to number B. Coming to number B. Copper releasing IUD. टाइम धीरे धीरे चला जा रहा है नहीं? हाँ सर। अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके एग्जाम के आसपास। जिनको समझ में आ चुका कि मेरा नहीं होगा वो क्लास में एब्सेंट है ना? जिनको लगता है कि पढ़ाई को छोड़ के और बहुत कुछ काम करने के लिए है मेरे लिए, वो सब क्लास में एब्सेंट है। So copper releasing IUD, it releases copper approximately 50 microgram per day. 50 microgram copper will be released by this particular device per day. And आप लोग पढ़े थे कि फर्टिलाइजेशन टॉपिक में हम लोग पढ़े थे स्पर्म का मोटिलिटी फास्टर होता है बिकॉज ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम इनफ्लक्स विप्लस मूवमेंट। ये कॉपर क्या करेगा ना, उस कैल्शियम रिसेप्टर और कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देगा। अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो गया तो कैल्शियम तो इनफ्लक्स नहीं होगा, उसके वजह से स्पर्म का जो मोटिलिटी है वो डिक्रीज करेगा कि नहीं? एंड स्पर्म का मोटिलिटी अगर डिक्रीज किया, अगर सप्रेस किया, तो फर्टिलाइजेशन का चांसेस जो है वो भी डिक्रीज कर जाएगा। So that is why we need to remember the mechanism behind this, how it is preventing the fertilization, how it is preventing the pregnancy. The second point is it suppresses the sperm motility. It suppresses the sperm motility and ability to fertilize the ovum. एंड ये धीरे धीरे जैसे ही कॉपर रिलीजिंग देखिए 50 माइक्रोग्राम पर डे है, हो सकता है कि कुछ दिन के बाद, मतलब कुछ साल के बाद, आफ्टर फ्यू इयर्स, the releasing of the copper quantity may be decreased. When the quantity of the copper releasing from the particular device will be decreased, becomes scanty, we need to replace this. क्योंकि क्वांटिटी अगर कम होगा तो ये जो इफेक्ट है वो भी कम हो जाएगा. So it is replaced after particular years. एग्जाम्पल हम लोग करते हैं. एग्जाम्पल ही सबसे इंपॉर्टेंट है. कॉपर टी 200 मल्टी लोड. ये मल्टी लोड से क्वेश्चन आएगा, पूछेगा लिपिड लूप, मल्टी लोड, LNG-20, कौन प्रोजेस्टेरोन आईयूडी है, कौन नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है, कौन
कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। लिपिज लूप मैंने प्रीवियस क्लास में लिखाया था नॉन मेडिकेटेड। मल्टीलेड हो गया कॉपर रिलीजिंग। इसके बाद LNG-20 आएगा हार्मोन रिलीजिंग आएगा। तीनों ही आईयूडी है, इन तीनों में डिफरेंस है। मल्टीलोड कॉपर टी 250, कॉपर टी 375, कॉपर टी 380, कॉपर 7। ये सब एग्जांपल। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू नंबर सी, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। Hormone releasing IUD, or as already I've told you, release hormones. And क्या हार्मोन है मैं एग्जांपल में बताऊंगा। इसका इफेक्ट है that will suppress the endometrial changes. Endometrial changes means endometrium thickening होता है, ये उसको suppress करेगा। That will suppress the endometrial changes that is takes place during the uterine cycle. We have discussed in the menstrual cycle. So suppress the endometrial changes, makes the uterus unsuitable, makes the uterus unsuitable for implantation. ठीक है, यूटेरस का वॉल को ये अनसुइटेबल कर देगा ताकि इम्प्लांटेशन प्रिवेंटेड हो। चेंजेस इन सर्वाइकल म्यूकस, changes in cervical mucus, anovulation means absence of ovulation, and insufficient luteal activity. Insufficient luteal activity का मतलब क्या है? Less secretion of progesterone की more secretion of progesterone. Less luteal activity मतलब corpus luteal का जो activity है उसको insufficient करेगा. So that gives rise to the changes. Endometrial change हो गया, uterus unsuitable for the implantation, changes in the cervical mucus, absence of ovulation is called as anovulation. Corpus luteum की एक्टिविटी को ये क्या करेगा ना, डिटोरिएट करेगा, डिजेनरेट करेगा, सप्रेस करेगा, इनसफिशिएंट। मतलब एज ए होल देखिए ये fertilization and pregnancy and implantation will be only occur when it is completely favorable. कहीं पे किसी जगह पे थोड़ा सा अगर चेंज हो गया, थोड़ा सा अगर अनफेवरेबल हो गया, जैसे कि ये सर्वाइकल म्यूकस आप लोग पढ़िए, हम लोग पढ़े थे प्रीवियस क्लास में ही चैप्टर में कि सर्वाइकल म्यूकस का जो थिकनिंग बढ़ जाता है, प्लग फॉर्मेशन करता है। अगर सर्वाइकल म्यूकस अगर ठीक से परफेक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा तो एबॉर्शन होने का ज्यादा चांसेस। तो ये क्या करेगा ना, इम्प्लांटेशन को अनफेवरेबल कर देगा, अबॉर्ट कर देगा बेबी को। एग्जाम्पल में आते हैं, प्रोजेस्टेरॉन यूडी, contain progesterone, levonorgestrel IUD, यही सबसे इंपॉर्टेंट LNG-20, यही क्वेश्चन में पूछेगा। तो LNG-20, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब क्या है? हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट
दिस इज ऑल अबाउट द आईयूडी। आईयूडी का नंबर हम लोग कितना दिए थे देखिए, नंबर 3, नंबर 4 था आईयूडी। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर 5, हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड एंड हार्मोनल आईयूडी में डिफरेंस क्या है? हार्मोन आईयूडिंग एंड हार्मोनल मेथड में डिफरेंस क्या है? Yes, hormonal IUD is a IUD which is to be placed in the uterus. Hormonal method is not a IUD. Hormonal method में इंजेक्शन हो सकता है, टैबलेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट इम्प्लांट नहीं। इम्प्लांट हो सकता है, इम्प्लानन हो सकता है, बट नॉट IUD। ठीक है? एंड रिमेंबर, ये जो प्रोजेस्टेरॉन है, ये जो लेवोनोजेस्ट्रॉल है, प्रोजेस्टेसार, लेवोनोजेस्ट्रॉल, ये सब क्या है? सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन वर्ड इज एप्लीकेबल टू नेचुरल, बट अगर जैसे जैसे कि यहाँ पे प्रोजेस्टेसार हो गया, लेवोनोजेस्ट्रल हो गया, आगे चलकर हम लोग देखेंगे कीटोडेसोजेस्ट्रल, प्रोजेस्टिन, ये सब वर्ड क्या है ना? सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन, आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरॉन। सो हार्मोनल मेथड में आते हैं। प्रिवेंट ओवुलेशन and implantation. So what is the mechanism of hormonal method? Na prevent ovulation and implantation. Changes in cervical mucus. Impairing its ability to allow and transport of sperm. Alteration of uterine endometrium. To make it unsuitable for implantation. Inhibition of motility and secretory activity of fallopian tube. की बात तो समझिए, यहाँ पे हमने एज ए होल डिस्कशन कर लिया कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ हार्मोनल मेथड, हाउ द हार्मोनल मेथड इज डूइंग द फंक्शन टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। बहुत सारे मल्टीपल इफेक्ट है, जरूरी नहीं कि हर हार्मोनल मेथड में सेम टाइप का इफेक्ट हो, अलग अलग हो सकता है। किसी में ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करेगा, इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करेगा। कहीं पे सर्वाइकल चेंजेस ऑफ म्यूकस, impairing its ability to allow and transport of sperm, means किसके थ्रू? The sperm is passing through what na cervix, passing through the uterus, passing through the fallopian to reach the ampulla. अगर उसका एबिलिटी को हम लोग डिजेनरेट कर दे, इम्पेयर कर दे, so impairing the ability to allow and transport of sperm, the sperm number will reach at the ampullary site will gradually deteriorate.
तो अल्टीमेटली यहाँ पे स्पर्म काउंट डिक्रीज करिए. अल्टरेशन ऑफ यूटेराइन एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम का जो वॉल का जो यूटेरस का जो वॉल है वो अल्टर हो जाएगा टू मेक इट अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन. And that also inhibit the motility and secretory activity of fallopian tube. अगर fallopian tube का motility activity, secretory activity अगर inhibited हुआ तो motility अगर decrease करेगा तो fallopian tube में movement of sperm and movement of ovum भी slow हो जाएगा. हमेशा याद रखना, fertilization and pregnancy only occur when the perfect condition will be approached. And that is why every copulation does not leads to fertilization. Every copulation does not leads to fertilization. Perfect condition होगा तभी जाके possible है. Everything should be perfect. And इसीलिए infertility का problem होता है. थोड़ा सा भी कहीं पे भी थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो infertility होगा. Infertility may be in case of male, may be in case of female. हो सकता है कि both हो. समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? तो नेक्स्ट आते हैं हार्मोनल मेथड का डिफरेंट टाइप्स. नंबर 1, oral contraceptive. Or oral pill. Means the tablet is to be taken orally. It's called as oral contraceptive or oral pills. Having either progesterone and synthetic progesterone को हम लोग क्या बोलेंगे ना, प्रोजेस्टिन भी बोल सकते हैं यहाँ पे. either progesterone or estrogen progesterone combination. कहीं पे भी ये याद रखिएगा, कहीं पे भी ओनली एस्ट्रोजन नहीं होगा. मे बी आइदर प्रोजेस्टेरोन और मे बी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन. कभी भी एस्ट्रोजन ओनली एस्ट्रोजन कभी पॉसिबल नहीं. आइदर इट इज प्रोजेस्टेरोन अलोन और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन. दैट विल बी ट्रीटेड एज अ व्हाट ना, कंट्रासेप्टिव. अगर प्रोजेस्टिन ओनली हुआ देन इट इज कॉल्ड एज प्रोजेस्टिन ओनली पिल और मिनी पिल. अगर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन हुआ देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट ना, कंबाइंड पिल. What are the different type of oral pill? Mini pill, combined pill. Mini pill में क्या होगा ना, iron only progesterone. And combined pill में क्या होगा ना, estrogen progesterone combination. और यही से क्वेश्चन है माला डी, माला एल, पीओपी. चलते हैं हम लोग, पहले आते हैं कंबाइंड पिल. कंबाइंड पिल both progestin and estrogen. प्रोजेस्टिन को आप क्या बोलेंगे, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन. And synthetic estrogen is called as what na, estrogen. और भी आएगा एस्ट्राडियोल, वो भी सिंथेटिक एस्ट्रोजन है. तो यहाँ पे हम लोग कंबाइंड पिल में बोथ प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज टू बी टेकन फ्रॉम डे 5 to 25. मेंस्ट्रुअल साइकिल का डे 5 से डे 25 तक ये ले आ जाएगा. तो अगर if a female is taking the combined pill in a regular basis from day 5 to day 25, day 5 मतलब the end of the menstrual phase, beginning of the follicular phase. day 14 में आ जाएगा ovulatory phase.
Up to 25, we can say the continuation of what na luteal phase. Day 5 to day 25, अगर ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का लेवल अगर हाई रहेगा, तो हाई प्रोजेस्टेरॉन हाई एस्ट्रोजन एफएसएचएलएच को इनहिबिट करता है कि नहीं? अगर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट रहेगा फ्रॉम डे 5 टू डे 25 ऑफ द फीमेल इन द ब्लड, दैट विल इनहिबिट व्हाट ना पिट्यूटरी हार्मोन एफएसएचएलएच. ओव्यूलेशन स्कैंटी होगा, परफेक्ट ओव्यूलेशन नहीं होगा, परफेक्ट ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म नहीं होगा. समझ में आ रहा है? इसमें प्रेगनेंसी का चांस रिड्यूस कर जाएगा. यही तो फायदा है. एग्जाम्पल, माला डी, माला एल. तो याद रखना कि माला डी माला एल इज ए कंबाइंड पिल, उसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हाई रहेगा. ऐसे क्वेश्चन देगा, ए फीमेल और ए वुमेन इज टेकिंग द माला डी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एप्लीकेबल टू दिस? तो याद रखना माला डी इज ए कंबाइंड पिल जिसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों रहेगा, एंड डे 5 टू डे 25. यही है क्वेश्चन. कंप्लीट है. So we are coming to the next. I'm coming to the next page. Mini pill. मिनी पिल में क्या होगा? Only progestin. Only progestin will be found. That means synthetic progesterone only होगा, and it should be taken daily. An example, POP. That is progestin only pill. यहाँ पे एक क्वेश्चन है सहेली रिलेटेड, वो मैं बताता हूँ. क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे ना, सहेली CDRI, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट. सहेली से क्वेश्चंस गारंटेड रहेंगे, एकदम टू द पॉइंट. ठीक है. सहेली नॉन स्टेरॉइडल oral contraceptive for women. Second point, developed in CDRI, Lucknow. Third is taken twice for initial 3 months. First 3 months it is to be taken twice. Then taken twice a week. Taken twice a week. So taken twice a week for 3 months, and then once a week. And that is why it is called as once a week pill. नेक्स्ट क्या है? नहीं, इसमें कोई स्टेरॉइड नहीं है. नॉन स्टेरॉइडल मतलब नो हार्मोन की विथ हार्मोन. इसमें कोई हार्मोन नहीं है, नो हार्मोन. इसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बिल्कुल नहीं है, नॉन स्टेरॉइडल. तो है क्या? राइट, कंटेन सेंटप्रोमेन, और ऑर्मिलेक्सिफेन, सेंट्रोमेन और ऑर्मिलेक्सिफेन which block, याद रखिए, which block
एस्ट्रोजन रिसेप्टर, देखिए ये एस्ट्रोजन का जो रिसेप्टर है उसको ब्लॉक कर देगा, तो एस्ट्रोजन क्या फंक्शन हो पाएगा? As they are blocking the estrogen receptor protein, so by means of the blocking the estrogen receptor, they are ultimately preventing the estrogen function in the female. तो इसको आप क्या बोल सकते हैं? सहेलीज एस्ट्रोजन और एंटी एस्ट्रोजन, ये है क्वेश्चन। तो सहेली एंटी एस्ट्रोजन, बिकॉज सहेली में जो केमिकल है that is called as centromen or ormelexifan, this is actually preventing the receiving of the estrogen as it is act as a blockage the estrogen receptor. And estrogen का फंक्शन आप लोग जानते हो, एस्ट्रोजन क्या करता है? एंडोमेट्रियम को थिकेंड करता है। अगर एंडोमेट्रियम थिकेंड नहीं हुआ इम्प्लांटेशन अनफेवरेबल होगा। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सहेली? यस, इट अल्टर द यूटेराइन लाइनिंग, so prevent the implantation. ये सब क्वेश्चन एकदम डायरेक्टली पूछेगा, इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको समझ में नहीं आया होगा या जो क्लास नहीं किया होगा वो तो पक्का फंसेगा, हर चैप्टर में फंसेगा। ये था सहेली के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन। अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट, इम्प्लांट। ये हो गया फर्स्ट, क्या था? फिर से मैं दिखा रहा हूं, हम लोग क्या स्टार्ट किए थे? ओरल कंट्रासेप्टिव पिल कम्स अंडर व्हाट ना? हार्मोनल मेथड। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल हो गया नंबर ए। अभी हम लोग नंबर बी स्टार्ट करते हैं, इम्प्लांट। इम्प्लांट प्रोजेस्ट्रोजेन, प्रोजेस्ट्रोजेन मतलब ये पे सिंथेटिक हो गया कि नहीं? सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन इज कॉल्ड एज प्रोजेस्ट्रोजेन आल्सो। सो प्रोजेस्ट्रोजेन इम्प्लांट बिलो स्किन, स्किन के नीचे प्रोजेस्ट्रोजेन सिंथेटिक हार्मोन को इम्प्लांट किया जाता है। सो बिलो स्किन मतलब ये डर्मिस के नीचे, so it is called as subdermal. इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, व्हाई द इम्प्लांट नॉट टेक्स प्लेस बिलो एपिडर्मिस, व्हाई इट इज बिलो डर्मिस ऑफ स्किन? ना डर्मिस होता है वेस्क्युलर, एपिडर्मिस होता है नॉन वेस्क्युलर। तो हार्मोन को डिफ्यूज होके ब्लड में जाना है, तो ब्लड तो डर्मिस में है, दैट इज व्हाई इट इज सबडर्मल नॉट सब एपिडर्मल। लॉन्ग टर्म कंट्रासेप्शन होता है ये। इसका बहुत सारे टाइप है, जैसे कि फर्स्ट आते हैं नॉर्प्लेंट। प्रोजेस्टिन ओनली device having 6 silicon capsule with levonorgestrel. तो लेवोनोजेस्ट्रोल क्या मैंने बताया था? सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टिन भी सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन है, सो इट इज प्रोजेस्टिन ओनली डिवाइस, मतलब इसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होगा, not the combination of estrogen progesterone. This contains only progesterone. A 6 silicon capsule है with levonorgestrel inserted below the skin, हम तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, as a fan shaped manner.
यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है ना, 6 सिलिकॉन कैप्सूल है, लेवोनोजेस्ट्रल प्रेजेंट होता है, फैन सेप्ट मैनर में होता है। डायग्राम आपका एनसीईआरटी में रखा हुआ है, डायग्राम इज गिवन इन द एनसीईआरटी। ऐसे फैन सेप्ट में ऐसे 6 सिलिकॉन कैप्सूल होगा, लाइक दिस। समझ में आ रहा है? ऐसे फैन सेप्ट मैनर में ये 6 सिलिकॉन कैप्सूल स्किन के नीचे प्लेस हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्प्लैंट। एग्जांपल, effective for 5 years. Effective for 5 years. So it's one of the best method which the couple who need actually the gap between two baby. Next है implanum. Implanum में होता है क्या ना, सिंगल रॉड। यहाँ पे 6 सिलिकॉन कैप्सूल है, implanum में सिंगल रॉड सेप्ट स्ट्रक्चर होगा। तो सिंगल रॉड लाइक डिवाइस which contain 3 ketodesogestrel. दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, ये सिंगल रॉड है, वो था 6 सिलिकॉन कैप्सूल, उसमें था लेवोनोजेस्ट्रल, इसमें क्या है केटोडेसोजेस्ट्रल। ये भी एक टाइप का प्रोजेस्टिन है, मतलब सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन है, एंड इफेक्टिव फॉर 3 years. So this is all about the implant, number B. नंबर सी में आते हैं, वी आर कंटिन्यूइंग व्हाट ना, हार्मोनल मेथड। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हम अभी हार्मोनल मेथड कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके अंदर एक तो पिल गया, दूसरा गया आपका इम्प्लांट, थर्ड आते हैं हम लोग क्या ना, इंजेक्शन। हार्मोन इंजेक्शन, जिसको हम लोग पॉपुलरली बोलते हैं डिपो प्रोवेरा। डिपो प्रोवेरा डायरेक्टली एग्जांपल में आते हैं, डिपोट मेट्रोक्सी, प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, डिपोट मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, दैट इज DMPA। only progestin. This contains only progestin and effective for 3 months. So this injection is to be repeated in every 3 months. Example number 2, norethistérone enanthet. Norethistérone enanthet, that is NETEN. This also contains progestin and it is effective for 2 months. It is effective for 2 months. And the last one is cyclopam and Mesigna. This contains both estrogen and progestin, and this is effective for 1 month. तो every 1 month में रिपीट करना है तो साइक्लोपैम कंटिन्यू कर सकते हैं, every 2 month में कंटिन्यू करना है तो नॉरेथिस्टेरोन एनिंथेट,
अगर एवरी 3 मंथ में रिपीट करना है तो डिपोट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसिटेट डीएनपीए. सो नेक्स्ट आता है नंबर डी. ये हो गया हार्मोन इंजेक्शन कॉल्ड एज व्हाट ना डिपो प्रोवेरा. वही एक क्वेश्चन. नेक्स्ट हम लोग आते हैं नंबर 4 और नंबर डी इमरजेंसी. इमरजेंसी और मॉर्निंग आफ्टर पिल. What is the meaning of emergency here? The emergency is supposed to be a couple who regularly intaking the contraceptives, a couple which is regularly using the contraceptives are unfortunately forgotten to take the contraceptives. Or unfortunately they are forgotten to take what? Any kind of what? The protection during the sex. So for that there must be a chance, maybe a chance that pregnancy may be caused, supposed to be. और सेकेंड केस क्या है ना, सपोज टू बी इन केस ऑफ सेक्सुअल अब्यूज, रेप केस. इन दैट वी नीड टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी बाय इमरजेंसी सिचुएशन एंड इट इज कॉल्ड एज इमरजेंसी. इट इज डजंट मीन कि इट शुड बी टेकन इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग आफ्टर पिल का मतलब मॉर्निंग में इसको लेते हैं ऐसा नहीं है. मॉर्निंग आफ्टर पिल मीन्स इट इज टू बी टेकन एज सुन एज पॉसिबल. That is why it is called as morning after pill. अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आता है. पहली बात तो हमेशा याद रखना, इमरजेंसी मतलब हम लोगों को करना क्या है ना, अलग अलग वे से इसको प्रिवेंट करना है. मतलब टैबलेट भी दिया जा सकता है, हार्मोन भी दिया जा सकता है. प्रिवेंट करना है, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट भी करना है. अगर ओव्यूलेशन हो गया, बहुत ही अलग अलग कंडीशन से, अगर ओव्यूलेशन नहीं हुआ तो ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करना है. अगर ओवुलेशन टाइम क्रॉस कर गया है तो इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करना है, फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करना है. अगर इम्प्लांटेशन हो गया है तो इम्प्लांटेशन को हमको अबॉर्ट करना है. So there are so many different things. And which hormone is called as pregnancy hormone? ना प्रोजेस्टेरॉन. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोगों को यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन हाई लेवल करना है. बहुत ज्यादा हाई करेंगे तो एफएसएच इनहिबिट कर देगा. समझ में आ रहा है? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बिनेशन करेंगे तो एफएसएच एलएच इनहिबिट कर जाएगा. तो एंडोमेट्रियम का जो कंडीशंस है वो अनफेवरेबल हो जाएगा. वहां पे ठीक तरीके से ओवम फॉर्मेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन ठीक से नहीं. सो दैट इज व्हाई मॉर्निंग आफ्टर पिल क्वेश्चंस रहता है. स्टार्ट करिए. ट्रीटमेंट फॉर अनप्रोटेक्टेड सेक्स, sexual assault, missed pill, and other reasons which have risk of pregnancy. समझ में आना चाहिए. समझ में आ रहा है कि नहीं? Second point is important. It should be taken within 72 hours. Practically इसका मतलब क्या है ना, हम लोग पढ़े कि लाइफ स्पैन ऑफ दिस स्पर्म एंड ओवम इज ऑलमोस्ट 40 to 72 hours. And that is the chance when the chances of fertilization is more. तो 72 आवर्स के बाद अगर हम मॉर्निंग आफ्टर पिल और इमरजेंसी पिल लेंगे तो ये रिस्क बढ़ जाएगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? So we need to prevent the pregnancy by means of preventing any kind of activity which is related to ovulation or pregnancy. So it should be taken within 72 hours. Within 72 hours, and also insertion of
IUD within 72 आवर्स। यहाँ पे दो चीज होता है, हम लोग को जितना हो सके एकदम इफेक्टिव तरीके से इमरजेंसी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करना है, इमरजेंसी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग खाली टैबलेट के ऊपर तो रिलाई नहीं कर सकते ना। We need to take the tablet within 72 hours and that tablet is called as what? The morning after pill. तो morning after pill is to be taken within 72 hours. Secondly, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए 72 hours के अंदर IUD भी इंसर्ट करना पड़ेगा। एंड IUD हम लोग पढ़े थे, सर्वाइकल म्यूकस को अल्टर कर देता है, यूट्राइन एंडोमेट्रियम को अल्टर कर देता है, इम्प्लांटेशन को अनफेवरेबल करता है, याद है? So we need to implant the IUD within 72 hours. We need to take the 72 hours morning after pill within 72 hours. Then only the effect will be very high. चलिए नेक्स्ट आते हैं। It prevent and suppress implantation and ovulation. What is the composition? It contain, इसमें होता है क्या है ना, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बिनेशन। या तो ओनली प्रोजेस्टेरॉन होगा और इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एग्जांपल देते हैं, आई पिल, पिल 72, अनवांटेड 72, कंप्लीट है। अब जो हम टॉपिक समझने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, एंड दैट इज व्हाट इंड्यूस्ड अबॉर्शन। एंड अबॉर्शन, इंड्यूस्ड अबॉर्शन मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ऑलरेडी द प्रेगनेंसी हैज बीन ऑकर्ड, वी नीड टू अबॉर्ट द फीटस। फीटस का जो साइज है वो मिनिमम होना चाहिए, अदरवाइज द रिस्क टू द मदर इज देयर, एंड दैट इज कॉल्ड एज इंटेंशनल। इसीलिए इंड्यूस्ड लिख रहे हैं हम लोग। इंड्यूस्ड मतलब इंटेंशनल अबॉर्शन। अननोइंगली बहुत कुछ अबॉर्ट हो जाता है, अननोइंगली फीमेल को पता नहीं चलता, अबॉर्ट हो जाता है बेबी। बहुत ही स्मॉल साइज होता है, विद इन द फर्स्ट कुछ हफ्ते तक, कुछ वीक तक जो साइज होता है एम्ब्रियो का, दैट इज वेरी स्मॉल साइज, साइज ऑफ ए व्हाट ना सोयाबीन, साइज ऑफ ए व्हाट ना वी कैन से व्हाट ना पी सीड, बहुत ही छोटा होता है। तो वो अननोन कॉज के लिए अबॉर्ट हो जाता है, नोइंगली नहीं, अननोइंगली। बट हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? नोन अबॉर्शन और इंड्यूस्ड अबॉर्शन और इंटेंशनल अबॉर्शन। अबॉर्शन 3 और 4 अलग अलग एक्टिविटी के थ्रू किया जाता है। नंबर 1, डायरेक्टली सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं। नंबर 2, गिविंग द सलाइन सोल्यूशन टू द फीटस। सलाइन सोल्यूशन इंजेक्ट करेंगे तो अनफेवरेबल हो जाएगा, वो इम्प्लांटेशन प्लेसेंटा ब्रेकडाउन हो जाएगा। जितना जितना लूज प्लेसेंटा होगा उतना अबॉर्शन का चांसेस ज्यादा है, एंड जितना लेट होगा प्लेसेंटा उतना स्ट्रांग हो जाएगा, रिस्क टू द मदर इज वेरी हाई। इन प्रैक्टिकल टर्म में इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी। तो इसीलिए मैंने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इट इज ए इंड्यूस्ड अबॉर्शन। द साइंटिफिक और टेक्निकल वर्ड फॉर द इंड्यूस्ड अबॉर्शन इज कॉल्ड एज व्हाट? एमटीपी। एमटी के बारे में हम सेपरेटली पढ़ेंगे अलग से, बस यहाँ पे खाली हम टेक्निक्स पढ़ रहे हैं कि हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ वे टू गो फॉर द इंड्यूस्ड अबॉर्शन। एक तो नंबर 1 स्क्रैपिंग, दैट इज सर्जरी। नंबर 2 हो गया इन्फ्यूजन ऑफ सलाइन सोल्यूशन।
नंबर 3 इज वैक्यूम एस्पिरेशन, वैक्यूम पंप के थ्रू भी निकाला जा सकता है. एंड नंबर 4 इज गिविंग द टैबलेट और पिल्स. एंड व्हाट इज दैट? कि प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करना है तो प्रोजेस्टेरोन को ब्लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन इज ए प्रेगनेंसी हार्मोन. सो यहाँ पे हम लोग प्रोजेस्टेरोन यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे एंटी प्रोजेस्टेरोन. लेकिन मॉर्निंग आफ्टर पिल में क्या था? प्रोजेस्टेरोन. इंड्यूस्ड एबॉर्शन में क्या यूज करेंगे? एंटी प्रोजेस्टेरोन. एंड एंटी प्रोजेस्टेरोन का साइंटिफिक नेम आप लोगों का क्वेश्चंस में आता है, दैट वी नीड टू रिमेंबर. प्लस सेकंड इज हम लोग प्रीवियस क्लास में ही पढ़े थे प्रोस्टाग्लैंडिन. प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शन क्या था? यूट्राइन मोटिलिटी को इंक्रीज करता था, याद है? दैट इज व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर द पैचुरेशन. देखो देखो कंसेप्ट कितना सिंपल है कि प्रोस्टाग्लैंडिन विल इंक्रीज द यूट्राइन मोटिलिटी, प्रोजेस्टेरोन विल स्टेबलाइज द यूट्राइन मोटिलिटी. प्रोजेस्टेरोन यूटिलिटी मोटिलिटी को डिक्रीज करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन यूट्राइन मोटिलिटी को इंक्रीज करता है. हमको तो अबॉर्ट करना है, अबॉर्शन करना है तो यूट्राइन मोटिलिटी को फास्टर करना पड़ेगा ताकि बेबी जो है वो डिटैच हो जाए, फीटस जो है, एम्ब्री जो है वो डिटैच हो जाए. सो वी नीड टू go for the two different type of tablet. Number 1 is anti-progesterone, number 2 is prostaglandin, mifepristone and misoprostol. Technical और scientific name है. Mifepristone is anti-progesterone and misoprostol is a prostaglandin. Clear है? चलिए लिखिए इसको बराबर, इंपोर्टेंट है. तो ये था आपका कौन सा? नंबर डी, इमरजेंसी और मॉर्निंग आफ्टर पिल. नंबर ई, इंड्यूस्ड एबॉर्शन. refers to premature expansion of the embryo from uterus, which is refers to MTP. हम लोग बाद में पढ़ेंगे MTP, safe up to what, can be done up to what. बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन है इंडिया में, आप लोग जानते हैं. नॉट इन इंडिया, a maximum country having a MTP Act. MTP is a very what now? It is, we can say it is punishable offense. We cannot go for the MTP. It is being completely prohibited. बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है जिसके थ्रू एमटीपी किया जा सकता है विद अ प्रॉपर जुडिशियल परमिशन. इसके लिए अलग से लॉ है, अलग से एक्ट है, हम लोग डिस्कशन करेंगे एमटीपी टॉपिक में. इट कैन बी परफॉर्म्ड through vacuum aspiration, इसको हम लोग बोलते हैं सक्शन, infusion of saline solution, or surgical evacuation, that is scrapping. और ड्रग्स भी है, सर्टेन ड्रग्स और द टैबलेट भी मैंने आपके साथ डिस्कशन किया, लाइक
mifepristone, that is called as antiprogesterone. And misoprostol, that is prostaglandin. एंड आपको मैंने जिस्ट बता दिया क्यों यूज होता है. One will block the progesterone, another will increase the uterine motility. Clear है? So this is all about the induced abortion. Point number E. किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? Now we are coming to average failure rate of different contraceptive method. Average failure rate. एंड आप लोग मैकेनिज्म भी पढ़े हैं. मैक्सिमम चीज आप डिस्कशन कर चुके हैं. आपको आइडिया हो गया होगा कि किसमें सक्सेस रेट हाई है, किसमें सक्सेस रेट लो है, which is reliable, which is non reliable. तो थोड़ा सा उसका परसेंटेज निकाल लेते हैं. जैसे कि फर्स्ट आते हैं विदाउट कंट्रासेप्टिव. कोई अगर कंट्रासेप्टिव यूज नहीं करता है तो no contraceptive use during the sexual activity. So failure rate कितना होगा ना, बहुत ज्यादा होगा, 90%. Natural और rhythm method, the failure rate is 20 to 30%. Coitus interrupt, coitus interrupt में failure rate हो जाएगा 23%. Chemical contraceptive, that will be approximately 20%. Barrier method, the average failure rate is almost 10 to 15%. Oral contraceptive, that is 2 to 3%. IUDs, almost 6%. Implant, that is approximately क्या हुआ? Slightly almost equal to 1%. And question में आता है कि IUD mostly used by the Indians. इसका मेन कारण क्या है ना? एक तो फेलियर रेट बहुत ही कम है. सेकेंड पॉइंट, इट इज कंप्लीटली व्हाट ना प्राइवेसी मेंटेन करता है. थर्ड इज इट इज लॉन्ग टर्म कंट्रासेप्शन भी. दैट इज व्हाई इट इज बीइंग यूज्ड बाय द इंडियन वुमेन्स मोस्टली. वी आर गोइंग टू, हमने स्टार्टिंग किया था, चेक करिए. टेम्पररी मेथड हम लोग स्टार्ट किए थे, याद करिए. तो टेम्पररी मेथड में हम लोग स्टार्ट किए थे. टेम्पररी मेथड के अंदर नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, आईयूडी, हार्मोनल मेथड, एवरीथिंग वी हैव फिनिश्ड कम्स अंडर व्हाट? टेम्पररी मेथड को हम लोग जब भी चाहे तब भी उसको रोक सकते हैं. मतलब ये क्या है, रिप्लेसेबल है या नॉन रिप्लेसेबल? कैन बी अल्टर.
बट परमानेंट मेथड क्या होगा? इज देयर एनी नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट? So what is the function of the permanent method, like your vasectomy, like your tubectomy? They prevent the gametogenesis or they are blocking the conduction of gamete. Gamete formation नहीं रुकता है. They just prevent or block the conduction of ovum and sperm. So we are coming to permanent method. Okay, permanent method, also called surgical method, terminal method, or sterilization method. याद रहेगा? Why it is called as surgical? क्योंकि ये तो सर्जरी किया जाता है. स्टेरिलाइजेशन मीन्स हम लोग को प्रॉपर वे में उसको सर्जरी करके काट के फिर से क्लोज करना पड़ता है. दैट इज स्टेरिलाइज्ड. टर्मिनल मतलब एंड मेथड. एंड मेथड मतलब इट कैन बी रिवर्स और कैन नॉट बी. नो रिप्लेसमेंट. इसको कोई रिप्लेस नहीं करना है. लाइफ टाइम होगा. बट कभी कभी होता क्या है कि वैसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी को भी फिर रीजॉइन पॉसिबल है. कट हो गया ना, फिर से रीजॉइन करना पॉसिबल है. बट द रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर. एनसीईआरटी का लाइन, रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर. हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले वैसेक्टोमी. अच्छा, इसका मेन फंक्शन क्या है वो भी लिख देते हैं. इसका मेन फंक्शन है इट ब्लॉक द कंडक्शन ऑफ form in male and ovum in female. तो ट्यूबेक्टमी का रोल क्या है? It prevent or block the conduction of ovum. वैसेक्टोमी का रोल क्या है? It block the conduction of sperm. फर्स्ट आते हैं वैसेक्टोमी. A part of vast difference of both testes will cut and occluded. Cut and remove लिखिए. Cut and remove and then occluded. ऐसे नहीं खाली कट कर देंगे, कट करके उसको रिमूव भी करना पड़ेगा. एंड उसके बीच में गैप मेंटेन किया जाता है. ऑलमोस्ट 4 to 6 सेंटीमीटर का एक गैप मेंटेन किया जाता है.
तो उस गैप मेंटेन करके उसको ऑक्लूडेड मतलब हीट देके उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। देखिए जो जो कैनल है, जो जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन को ब्लॉक करना जरूरी है, अदरवाइज द स्पर्म विल बी कंडक्टेड अगेन। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सपोज टू बी ये टेस्टिस है, दिस इज वन पेयर ऑफ टेस्टिस। तो यहाँ पे ये सपोज टू बी हो गया आपका कौन सा, क्या है ये, एपिडिडाइमिस, ऐसे निकला, ऐसे कट कर दिया जाएगा, कट करके ऐसे तो टाई कर दिया जाएगा। समझे? ऐसे बांध दिया जाएगा यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, एंड उसको हीट देके क्लोज कर दिया जाएगा, उसका जो ओपनिंग है ना उसको क्लोज कर दिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज ऑक्लूडेशन और ऑक्लूडेट। तो पहले तो उसको कट करके एक पोर्शन रिमूव कर दिया जाएगा ताकि द चांसेस ऑफ रिमूवल और चांसेस ऑफ रीयूनियन शुड बी प्रिवेंटेड। ऐसे भी हो सकता है कि रीयूनियन हो जाए, इसलिए एक पोर्शन को निकाला दिया जाएगा, उसके बाद उसको हीट देके ऑक्लूडेट कर दिया जाएगा। सो इट do not prevent spermatogenesis. Secretion of secretion of testosterone. But it prevent what? The conduction of sperm. तो इजैकुलेशन होगा कि इजैकुलेशन नहीं होगा? नहीं होगा। वाह, यही क्वेश्चन भूल जाते सब कुछ ना, बहुत बढ़िया। Semen will be ejaculated but without sperm. सीमेन का ओनली 10% स्पर्म था। सब भूलेंगे तो भाई क्या करेंगे? सीमेन में 10% स्पर्म था, 60% के आसपास था सेमिनल वेसिकल फ्लूइड, 30% था प्रोस्टेटिक फ्लूइड। वो तो ब्लॉक नहीं हो रहा है ना, हम लोग खाली वास्ट डिफरेंस को कट करके ब्लॉक कर दिया। तो सीमेन विल बी प्रेजेंट, विल बी अवेलेबल ड्यूरिंग द इजैकुलेशन, बट इट इज विदाउट स्पर्म। यही है क्वेश्चन। चले आगे। Now we are coming to the next tubectomy. So tubectomy, a part of oviduct, a part of oviduct will cut and remove and then occlude it. So we can say ovulation, oogenesis, secretion of hormone, that is ovarian hormone,
will continue. Working, but conduction of ovum will be prevented. Or ovum conduction will be prevented. तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो. नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल एवरीथिंग विल बी नॉर्मल. मैंने स्टार्टिंग में एक चीज लिखाया था कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड शुड बी आइडियल when it is without interfere with the sexual activity. अगर ये sexual activity और sexual behavior में ये interfere करेगा, that cannot be treated as a contraceptive. यहाँ पे देखिए normal activity continue करेगा. There will be nothing to be happen with the male and female if it is undergone vasectomy and tubectomy. कुछ नहीं होगा. Nothing. Everything will be as usual. But just the fertilization will be prevented and the sperm will be absent in the semen. Okay? So this is all about the different type of your contraceptive हम लोग जो start किए थे. अभी हम लोग side effect लिखेंगे contraceptive method का. उसके बाद हम लोग MTP start करते हैं. ठीक है, side effect. Side effect of contraceptives. मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था कि except natural method all are unnatural and all the natural methods are more or less with side effect. क्या side effect है? Except the natural method all are unnatural. So with side effect. Nausea, tendency of vomiting, abdominal pain, breakthrough bleeding, बीच बीच में रुक रुक के जो ब्लीडिंग होता है उसको ब्रेकथ्रू ब्लीडिंग बोलते हैं. इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग. ये सब कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है. Now we are coming to the most important topic, medical termination of pregnancy. MTP. इसमें मैं सीधा सीधा आपको वही जो एक्ट है कंडीशन से वही मैं आपको बता दूंगा और उसी से ही क्वेश्चन आएगा. तो ये वॉलंटरी है कि इनवॉलंटरी है? अभी तो बात किए थे, क्या हो जाएगा? वॉलंटरी और इंटेंशनल और इंड्यूस्ड. Abortion, to end the pregnancy. The next point is very important. Worldwide, ये statement NCERT based है. Nearly 20% of the total pregnancy
get aborted. आप सोचिए ना 20% ऑफ द प्रेगनेंसी वर्ल्ड वाइड इज अबॉर्टेड. अब ये बहुत एक सीरियस कंडीशन है कि नहीं? ये बहुत ही एक सीरियस इशू है बिकॉज 20% ऑफ द टोटल प्रेगनेंसी वर्ल्ड वाइड अबॉर्टेड हो रहा है. इसीलिए इसको समझना, जानना, लॉ के बारे में डिस्कशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. द नंबर ऑफ एमटीपी the number of MTP is 40 to 50 million per year. इंडिया की बात कर रहे हैं, सॉरी वर्ल्ड की बात कर रहे हैं. तो एमटीपी इज सेफ अप टू, ये जो पॉइंट्स है एमटीपी इज सेफ अप टू. देखो हम लोग इसको याद रखने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्लासेंटा वीक होता है. Second trimester onwards, the placenta gets very strong, matured. तो strong matured होगा तो abortion करने में difficult होगा कि नहीं? तो इसीलिए safe up to first trimester, मतलब 12 week. उसके बाद रिस्क बढ़ जाता है. चलिए, the MTP is safe up to 12th week, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर. The MTP can be done up to 20 weeks as per MTP Act 2002. MTP Act जो फर्स्ट बना था वो कब बना था? 1997 में पहले बना था. फर्स्ट, सॉरी 1971, आई एम सॉरी 1971. 1971 में फर्स्ट एमटीपी एक्ट हुआ था एंड धीरे धीरे सिचुएशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से इसको मॉडिफाई किया गया है. एंड दैट मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड एज व्हाट ना, अमेंडमेंट. क्या बोलते हैं? सो 1971 इज द फर्स्ट एमटीपी एक्ट वाज amended in 2002 and again in 2017 में रिसेंटली किया गया है. and then 2017. हमने क्या लिखा? MTP can be done up to what? As per MTP Act what? 2002. अभी रिसेंट क्या है? 17. So as per MTP Act 2017, MTP can be done up to 12 week with the opinion of one medical officer and in between 12 to 24 week. 12 to 24 week with the opinion of
to medical officer. ये कंडीशंस हो गया, मतलब 24 वीक तो किया जा सकता है एज पर एमटीपी एक्ट 2017, बट अप टू 12 वीक मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर with the permission from the one medical officer, and in between 12 to 24 मतलब up to second trimester तक किया जा सकता है, बट रिस्क बढ़ जाएगा, इसीलिए मेडिकल ऑफिसर का ओपिनियन भी जरूरत हो जाता है. एंड इसका मेन ये इतना सारा एक्ट वगैरह क्यों है, अल्टीमेटली अबॉर्शन को हम लोग एमटीपी बोल रहे हैं. एंड नॉर्मली आप लोग पढ़े हैं प्रीवियस क्लासेस में, हम लोग डिस्कशन किए थे फीमेल फिटिसाइड्स. फीमेल फिटिसाइड एमटीपी के साथ लिंक है पूरा. तो व्हाट इज द रूल्स एंड रेगुलेशन व्हिच आर टू बी फॉलोड थ्रू एमटीपी इज टू प्रिवेंट ओनली द फीमेल फिटिसाइड. ठीक है, तो प्रीनेटल diagnostic technique, that is regulation and prevention of misuse. Regulation and prevention of misuse. The act is to be occurred in 1994 and was amended in 2003. तो ये 1994 वाला एक्ट क्या है, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट. तो प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994 अमेंडमेंट का हुआ है ना 2003 में. एंड व्हाई दिस टेक्निक और दिस एक्ट हैज बीन ऑकर्ड टू रेगुलेट एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज. समझ में आया? So this is all about the NTP. We are starting the next topic, STD or sexually transmitted infections or disease.